हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स शाला। हम लोग क्लास 10th के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। हाँ बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम हाथ पे है, नज़दीक है और केवल एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चंस बनाना काफ़ी नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर बेस्ड ही सीबीएसई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड जो अभी होने वाले हैं उनके सारे इम्पोर्टेंट टाइप जो कमिंग बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं वैसे क्वेश्चनों को कलेक्ट हमने किया और बारी बारी से आपके पास अगले 2-3 वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। हाँ स्टूडेंट्स, केवल वही क्वेश्चन काफ़ी नहीं है, उनसे रिलेटेड वैल्यू चेंज करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बच्चों जो हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो वो आगे के इस तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलो, ताकि जैसे कि हमने वीडियो बनाया और वीडियो आपको आपके डिवाइस पर मिल गया। और इस वीडियो में हम काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो को लास्ट तक मत देखना मत भूलो, लास्ट तक जरूर देखो। हाँ स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जिसमें एंगल गिवन था, हमको खुद डिसाइड करना पड़ता था कि उसके साइन के वैल्यू फाइंड लेने हैं, कॉस के या टेन के, एंड सिंपल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री पर बेस्ड क्वेश्चन सारे देखे। लेकिन अब जो सबसे पहला क्वेश्चन इस वीडियो का हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें एंगल गिवन नहीं है, एंगल गिवन नहीं है, बल्कि कहो तो और आसान कर दिया कि अगर एंगल थीटा है तो tan थीटा के वैल्यू गिवन है और उसके वैल्यू को यूज करके ही आपको पर्टिकुलर हाइट या डिस्टेंस फाइंड करने हैं। चलो आगे इसमें और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज है ये देखने की बारी है। क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए vertical tower is found to be such that its tangent is 3/5. On walking 50 meter towards the tower, the tangent of the new angle of elevation of the top of the tower is found to be 4/5. Find the height of the tower. First of all, students, you have to draw a figure. That is, here let us suppose AB be the h meter high tower, and firstly the angle of elevation from point P, that is alpha, and here it is given tangent is 3/5. Then the angle, if that angle is alpha, then tan alpha is 3/5. It is given here, tan alpha equal to 3/5. Now the observer walks 50 meter towards the tower. Now
the new position of the observer will be at Q, and suppose the angle beta is the new angle of elevation of the top A of the tower AB. Then here it is given कि tan beta is 4 by 5. Tan beta is 4 by 5, it is given. Tan beta is 4 by 5. Now, here as per the question, we have to find height of the tower. That is, we have to find here h. Now, after the figure and description of the figure, it is very clear and you can solve it easily. First, if this PQ distance is 50 meter and suppose BQ equal to x meter, then total length BP is required for the triangle ABP. Then for that BP equal to x plus 50 meter. It is clear. In right angle triangle ABQ, in that angle, this triangle angle beta. Tan beta equal to AB, this is height, and base is x, then h by x, and here it is given tan beta equal to 4 by 5. After solving, you will get 5h equal to 4x. Take this as equation number 1. Now, consider triangle, right angle triangle ABP. In ABP, tan alpha equal to AB by BP, and BP, that is x plus 50 meter. Put values, you will get 3 by 5 equal to h by x plus 50. After solving, you will get h equal to 3 into x plus 50. Take it equation number 2. Now, look here, in equation number 1, here is 5h, and equation number here is 5h. We can write using equation 1 and 2, 4x equal to 3 into x plus 50, and by multiplying and solving, you will get x equal to 150 meter. Then students, find h. To find h, you can put the value of x in equation, either in equation 1 or in equation 2. Here I have used equation 1 to find h, that is h equal to 4x by 5, and x equal to 150, then h equal to 120 meter. Then hence we can say that height of the tower is 120 meter. है ना बच्चों? काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन. चलो अगला क्वेश्चन के और चले आओ. क्वेश्चन नंबर 5 हम नंबरिंग किए हुए हैं. देन ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है. देखो क्या कह रहा है. ए वर्टिकल पोल एंड ए वर्टिकल टावर, दोनों वर्टिकल है, आर ऑन द सेम लेवल ग्राउंड. फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द tower is 60 degree. Is 60 degree. Here this angle is 60 degree, and the angle of the depression of the foot of the tower is 30 degree. Is 30 degree.
This question is very interesting, very important. First of all, try to understand that any observer observes from the point B, that is 20-meter high pole. Here it is a pole. Here it is said a vertical pole and a vertical tower are on the same level ground. It is the level ground, and height of this pole is 20 meter, and B is the point where the observer observes the angle of elevation of the top of the tower. Top of the tower is A, is 60 degree, and from that point B, same point, from point B, observes the angle of depression of the foot of the tower, that is 30 degree, and you know this angle is equal to this angle. This is 30 degree. How? Interior alternate angles are equal. Then as per these are two vertical poles forming right angle, then this is the rectangle. You can say if this height is 20 meter, then height of this yani DE equal to also 20 meter. And if you are saying that this AD equal to X, then total height of the tower is X plus 20, X plus 20. And now if ये आपके y हैं. Now let us start to solve. Take triangle ADB, ADB, ADB is a right angle triangle. Here you have angle 60 degree, then use tan 60 equal to AD by BD, and AD is X and BD is Y. Solving that, you will get X equal to root 3Y. Take it equation 1. Next, consider right angle triangle BDE, BDE. Consider this right angle triangle. Here angle B equal to 30 degree and tan 30 equal to BE, DE. Here DE perpendicular by base is BD. Then you will get 1 by root 3. Tan 30 is 1 by root 3 equal to 20 by Y. And solving that, you will get Y equal to 20 root 3. Now after this, you have to find the value of X and Y. That is, you will get Y equal to 20 root 3 and X, from using equation number 1 and 2, you can say X equal to 60 meter. And here you have to find, according to the question, you have to find height of the tower, that is AE, and AE equal to 20 plus X, X plus 20, and you will get X equal to 60, 60 plus 20 is equal to 80 meter. This is the answer. Now let us solve question number 6. It is also a very interesting, important question for both the boards. Here the horizontal distance between the two towers is 75 meter and the angular depression, ठीक है, of the top of the first tower as seen from the top of the second. This is the second tower, and this is the it is from the seen from the top of the second tower. It is second tower, which is 160 meter high. Second tower is 160 meter high, and from this point C is the point of observation. You have to observe the top of the first tower. That is, top of the tower is A. It is given 45 degree. Find the height of the first tower. That is, you have to find
height AB. And let us suppose here AE equal to x, and it is given distance between the towers is 75 meter. That means BD equal to EC equal to 75 meter. Okay. Now it is very simple. That is, here you have to consider right triangle AEC. Here angle C is equal to 45 degree. Then tan 45 equal to AE by EC. Value of tan 45 is 1, equal to x by 75. And here after solving you will get value of x AE, that is 75 meter. But we require AB. Then find the value of AB, that is x plus 160, and x is 75. 160 is the given height of the second tower. Then that is total height is 235 मीटर, है ना. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन. चले आओ, एक और अच्छा क्वेश्चन हमने रखा है. ये डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोनों बोर्ड के लिए. दोनों बोर्ड्स के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. देन an aeroplane flying horizontally 1 kilometer above the ground and going away from the observer. हाँ, क्या कहा है, ध्यान देने की बात है. ये पॉइंट ऑब्जर्वर कहाँ है, पी पर है, और ये एरोप्लेन किधर जा रहा है, गोइंग अवे, दूर की ओर जा रहा है. यहाँ सपोज आपका पहले पोजीशन था एरोप्लेन का, अब पोजीशन कहाँ हो जाता है, यहाँ हो जाता है. वो दूर की ओर जा रहा है एरोप्लेन 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड. एंड ये हाइट क्या है, हाइट दैट इज CD इक्वल टू AB इक्वल टू 1 किलोमीटर, दैट इज 1000 मीटर, दैट इज 1000 मीटर हियर. नाउ observer is observed at an angle of elevation 60 डिग्री. यहाँ से क्या देखता है, यहाँ से 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है एरोप्लेन के लिए. आफ्टर 10 seconds इट्स elevation is observed to be 30 degree. Here this angle is 30 degree. Find the uniform speed of the aeroplane in kilometer per hour. Okay. Now let us suppose this distance BP, that is, let us suppose x meter, and here dB equal to y meter. Then the total distance BP equal to x plus y meter. Now consider, first of all consider this triangle ABP, and in ABP this angle is 60 degree. Then tan 60 equal to AB. First of all take this perpendicular and then base, BP is x. That means you can say कि value of tan 60 is √3 and equal to 10,000 by x, and by solving you can find value of x, that is 1000 by √3 meter. Its unit is meter, and this equation number 1. Now we have to solve in another triangle, that is triangle CDP. In right triangle, here angle, this angle is 30 degree. So tan 30 equal to CD by CD perpendicular by base is DP, and you know value of DP or PD equal to x plus y, that is 1 by √3 equal to 1000 by x plus y. Now use cross multiplication, you will get
x plus y equal to 1000 root 3 meter. It is equation number 1. And then solve both the equations, solving 1 and 2, that is y equal to 1000 root 3 minus 1000 by root 3. Take LCM root 3. Root 3 into root 3 is 3 and 3 into 1000 is 3000 here, and minus 1000. 3000 minus 1000 by root 3. But you cannot keep root 3 in denominator. Now your rationalizing factor is root 3. Multiply numerator and denominator by root 3. You will get here 3000 minus 1000 is 2000 divided by 3 into root 3, and you know value of root 3, that is 1.732 meter. And after multiplication you will get in kilometer, it is 1.1547467 kilometer. It is distance BD. Now time is given is 10 seconds. Convert the 10 second into hour. All of you can simplify it, and after simplification you will say, you know from physics, speed equal to distance by time. Then speed of the aeroplane equal to distance traveled is 1.15467 divided by 1 by 360, that is 426 km per hour approximately. Then speed of the aeroplane is 426 km per hour. Now you will get same type of questions, but the language may be different. It is here, it is given the aeroplane is moving away, and sometimes it may be it is moving towards the observer. Then angle of elevation changes from 30 degree to 60 degree. In that case you can calculate the speeds in similar way, but there is some extension in the question that what is the time taken by the aeroplane to reach just above the observer, the point of observer, that from that observer is observing. मतलब समझो ये एरोप्लेन इधर से इधर मूव कर रहा था और ये यहाँ से यहाँ तक मूव करने में उसको कितना सेकंड का टाइम लगेगा, है ना। जो इसके एरोप्लेन के जगह पर शिप से रिलेटेड क्वेश्चन आपने बनाए होंगे, ठीक है। तो इसके शिप हो, कार हो, एरोप्लेन हो, लैंग्वेज डिफरेंट होंगे, क्वेश्चंस सिमिलर टाइप के ही आएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करो, डिफरेंट क्वेश्चंस उठाओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम आपसे यहीं पर विदा लेते हैं, लेकिन जल्दी ही अगले और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, ठीक है। तो इस तरह के वीडियो को पाने के लिए और कैसा लगा उसको लाइक करके ज़रूर हमें बताओ। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।